Hello everyone, welcome back to my channel. So hope so you are doing great, and in this video we are going to discuss about the NORCIT PYQ, that is the pharma's PYQ basically. So this topic is something very much डिफिकल्ट फॉर द पीपल कि फार्मा में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्या पढ़े, कितना पढ़े, बिकॉज येस दिस इज समथिंग द वेरी डिफिकल्ट टॉपिक एंड वी टेंड टू फॉरगेट very easily. So that's why today is our pharma PYQ that is already came in NORCIT 9 and 10. So start करते हैं with the first questions. So that is the patient is started on intravenous hydrocortisone, right? Which nursing action should be performed after administration? So after administration, which nursing action you should perform, right? So A is the assess blood glucose levels, B encourage high sodium diet, C withhold fluid intake, and D monitor for hypokalemia only. So you know very well that is hydrocortisone and dexamethasone and methylprednisolone. So these all drugs belongs to corticosteroids, right? So corticosteroids से belong करते हैं. एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या करते हैं? इट बेसिकली ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है, सो ग्लूकोज का प्रोडक्शन करता है. सो ऑफ कोर्स ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या करेगा? इंक्रीज करेगा. ठीक है, सो इट इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल प्लस इट ऑल्सो लीड टू सोडियम एंड वाटर रिटेंशन. सो बीपी भी इंक्रीज होता है पेशेंट का, एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी होता है. सोडियम इंक्रीज होता है, पोटेशियम डिक्रीज होता है, सो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी करता है. ठीक है ना? सो दिस इज समथिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यू कैन से साइड इफेक्ट्स और द इफेक्ट ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. इसके अलावा भी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, इफेक्ट्स होते हैं, बट दिस टू यू हैव टू नो वेरी इंपॉर्टेंटली. सो उन्होंने बोला है कि आफ्टर गिविंग IV hydrocortisone, which nursing action should be performed after administration? So A, assess blood glucose level. So yes, it is important because it increase the blood glucose level. So we have to assess कि blood glucose कितना है, whether it is too much high. अगर too much high होगा तो of course we have to give insulin. So assessing the blood glucose level is important. ठीक है. अदर ऑप्शंस देखते हैं. बी इज द इनकरेज हाई सोडियम डाइट. सो सी corticosteroids, this hydrocortisone also already lead to sodium and water retention. So sodium retain करेगा, so already it leads to hypernatremia. So why we encourage the patient to take high sodium diet until and unless there is some indications, like अगर patient को already hyponatremia है, severe hyponatremia, तो of course उसको sodium intake ज़्यादा करना होगा. Otherwise if there is no any indication, there is no need to take high sodium diet. Okay, so this is the wrong option. Coming to the C, that is withhold fluid intake. Okay, so of course this hydrocortisone will lead to sodium and water retention, but until and unless there is some indications, like if the patient having some kidney disease and all, तभी हम फ्लूइड का इंटेक रिस्ट्रिक्शन करेंगे, फ्लूइड जो है वो विथहोल्ड करेंगे. अदरवाइज देयर इज नो एनी इंडिकेशन, देयर इज नो एनी रूल कि अगर पेशेंट हाइड्रोकॉर्ट ले रहा है, हाइड्रोकॉर्टिसोन ले रहा है, तो हमें फ्लूइड इंटेक रिस्ट्रिक्शन करना है. सो दिस इज अगेन द रॉन्ग क्वेश्चंस. ठीक है, अगर पेशेंट को किडनी डिजीज एंड ऑल होता तो ऑफ कोर्स हमें रिस्ट्रिक्शन करना पड़ता. Coming to the D options, that is monitor for hypokalemia only. This is very important. See, monitor for hypokalemia only. मैंने क्या बताया कि सोडियम रिटेंशन करता है एंड it also leads to hypokalemia, है ना? So hypernatremia hypokalemia करता है, but only monitoring the hypokalemia is not the options, है ना? कि आपको सिर्फ और सिर्फ hypokalemia के लिए मॉनिटर करना है. नो, you have to monitor for blood glucose level also, BP also, and electrolyte also. ठीक है, so A and D both are correct, but they said कि monitor for hypokalemia only, and because of that reason D is the wrong options. तो बचा कौन? That is A. So A is the correct answer, and that's the rule in the exam. We have to choose the best answer, best possible answer in these four options. हो सकता है कि four options correct होगा, but we have to choose the best one. Okay, so B and C तो easily eliminate हो गया, but बची बात हमारा A and D में, and D also eliminated because it said only, so D is also eliminated. Then the rest is the A, so A is the correct options. Understood? ठीक है. Moving to the next questions, that is a patient develops fever post surgery. So after surgery patient develops fever. Okay,
So the consultant prescribes an antibiotic according to the antibiotic stewardship program. What should be the most appropriate nursing action? Okay, A. Administer antipyretics only. B. Withhold antibiotics and send appropriate culture sensitivity test before starting antibiotics. C. Give antibiotics immediately as prescribed. And D. Increase fluid intakes only. You know very well that is according to the antibiotic stewardship program, that's the mainly aim क्या है कि we have to give the right antibiotic, very important, right antibiotic with right dose होना चाहिए, and right route, very important. If patient having severe sepsis है ना, sepsis बहुत ज़्यादा है, patient unstable है, of course we have to give antibiotic via intravenous route. अगर patient stable है, इतना ज़्यादा sepsis नहीं है, तो we can give via oral route है ना. So that is the right dose होना चाहिए, right antibiotic, right dose, right route, and very important, that is the right duration. Why we are giving this right? So that it decrease the antimicrobial resistance है ना. So antibiotic resistance decrease करेगा, and of course the empirical use of antibiotic भी क्या होगा, decrease होगा, and because of that of course patient का side effects भी कम होगा, and जो antibiotic resistant जो हो जाता है वो भी कम हो जाएगा because of that reason. ठीक है. So choosing the right antibiotics depend on the culture and sensitivity है ना. So we have to send the specimen like either urine or blood, or if patient having endotracheal tube, so हमें ET aspiration, that is endotracheal aspiration, और broncho alveolar lavage send करने हैं. And after coming the reports after culture and sensitivity, we have to start the antibiotic according to the organism. कौन सा organism growth हो रहा है उसके अगेंस्ट हमें राइट डोज, राइट रूट एंड फॉर राइट ड्यूरेशंस के लिए हमें एंटीबायोटिक्स स्टार्ट करना है. वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द मेन एम इज दैट कि हमें एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से प्रिवेंट करना है. जो एंटीबायोटिक जो रेजिस्टेंट हो रहा है उसको हमें प्रिवेंट करना है, साइड इफेक्ट्स को हमें मिनिमाइज करना है. सो पेशेंट को फीवर हुआ, ऑफ कोर्स पोस्ट सर्जरी, इट मींस फीवर इज द मेन इंडिकेशन कि पेशेंट को इन्फेक्शन है. जब कभी भी पेशेंट को फीवर होता है, देयर इज समथिंग कि पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है ना, क्योंकि जब भी इन्फेक्शन होता है सबसे द मोस्ट कॉमन साइन दैट अपीयर्स, दैट इज द फीवर. सो फीवर हुआ पोस्ट सर्जरी, कंसल्टेंट ने एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब किया अकॉर्डिंग टू दिस प्रोग्राम. सो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन क्या होगा? ए, एडमिनिस्टर एंटीपायरेटिक्स ओनली. ओके, so giving antipyretics is important because fever है तो of course we have to give antipyretics, but only antipyretics से कुछ होगा? No, antipyretics is for reducing the fever, right? But fever का cause क्या है? fever का cause है infection. तो until and unless you will not treat the infection, you will not treat the cause, fever subsides नहीं होगा. It will appear on and off होता रहेगा. बस antipyretics का जब तक action होगा, जब तक fever नहीं होगा, otherwise again fever reappear हो जाएगा. So only giving antipyretics is not the solution. So it is the wrong options. B है withhold antibiotics and send appropriate culture sensitivity test before starting antibiotics. So let's suppose अगर कोई antibiotics चल रहा है, we have to withhold that, we have to send the specimen for culture and sensitivity, and after coming the reports we have to start the new antibiotic. So yes, it is the correct options, but still we have to read the C and D option. So C is saying give antibiotics immediately as prescribed. Wrong, because we don't know which organism is growing है ना. So we have to give this क्या बोलते हैं antibiotic against that organism. But until unless culture and sensitivity result नहीं आएगा, we don't know कि कौन सा organism growth हो रहा है. So we have not start antibiotic immediately. It is the wrong options. And D is saying increase fluid intake only. Again the wrong options. Why? Yes, in fever there might be chances of sepsis, so हमें patient को fluid देना है, antipyretics देना है, but only antipyretics, only fluid is not the solution. So that's why it is the wrong options. So the correct answer is B is the correct answer. So I hope you understand that questions very well. Moving to the next questions, that is a pediatrician's order intravenous calcium for 1 year
old with symptomatic hypocalcemia. You know very well कि अगर पेशेंट को hypocalcemia होता है then the management is calcium. ठीक है, so calcium carbonate basically. Which method of administration should not be performed? Again, very important word, and that made you silly mistakes, right? So you have to very kind of vigilant for these kind of words like not, yes, true, false, except, include, exclude. So these words is something the trapping words. Examiner wants to trap you by these words, and you have to be very much vigilant during your exam time for these kind of words. Okay, so not to be, it means सारे के सारे options correct है, only one option is the wrong options, right? So A is saying fast IV rapid IV bolus, B slow IV push over several minutes, C is saying diluted continuous IV infusion, and D is saying intraosseous administration in an emergency. So I told you earlier in like fundamental of nursing classes that for management of hypocalcemia we are giving calcium. So basically we have two form of calcium, calcium chloride or calcium bicarbonate. So basically we are giving most commonly that is calcium bicarbonate. So I told you that calcium carbonate should be given with the rule of 10 10 10. What is meant by 10 10 10? It means 10% of calcium bicarbonate in 10 ml of NS over 10 minutes. Okay, so we have to give 10% of calcium carbonate in 10 ml of NS over 10 minutes. Very important. It means we have to give these drugs over 10 minutes and never ever give IV bolus. Why? Because it can lead to hypotension, bradycardia or arrhythmia, and in the last it can lead to cardiac arrest. Very important. And because of that reason, to prevent that this kind of side effects or complication, you have to give 10% in 10 ml NS over 10 minutes. Very important, right? So A is saying fast IV rapid IV bolus. Again, you can't give fast IV rapid bolus because it can lead to cardiac arrest. Okay, so A is the wrong option. So हमें तो पता चल गया A is the correct answer, but still in the exam you have to read all 4 options because you don't know, they might be कि D वाला ज़्यादा correct हो सकता है. So that's why we have to read all options in the exam. Very important. If you find A is the correct answer, still you have to read all the 4 options. Okay, so B is saying slow IV push over several minutes. Yes, it is correct. By that method we can give calcium bicarbonate. C is saying diluted continuous IV infusion. So let's suppose if any adult, किसी को भी अगर severe hypocalcemia, तो we have to give continuous infusion है ना. So continuously हम इसको dilute करके भी दे सकते हैं continuous infusion में with the help of infusion pump. So it is again the correct answer. So it is again the correct options. By infusion pump with dilution we can give calcium bicarbonate. So it is again the right options. D is saying intraosseous administration in an emergency. So let's suppose in the emergency condition, if you are not able to find any veins, any peripheral or central veins, so in that condition you can give intraosseous also. So it is also the correct options. So A is the wrong option. By A method, by fast IV rapid bolus, you can't give calcium bicarbonate because it can lead to hypotension, bradycardia, arrhythmia or even cardiac arrest. Understood? So till that questions what you have find, that is in the exam, in the NORCET exam, which type of questions they are asking. They are not asking कि for hypocalcemia what we are giving, है ना. They making that questions in a way that they are checking your practical knowledge. It means कि कैल्शियम आप कैसे दे रहे हो. So they are saying कि कैल्शियम हमें हाइपोकैल्सीमिया में देना है, but how you are giving, है ना. So all these questions you are able to see कि they are checking your practical knowledge. They are checking that if you become a nursing officer then how you will work, and that's the main important. हमें जो भी knowledge हम grab कर रहे हैं, that's not give just taking that knowledge and put in our mind. We have to use that knowledge. So using that knowledge is something very important. So that's why I always insist you people that please practice MCQ, and most importantly that is PYQ. So MCQ, PYQ, please practice करो. Just only reading the theory is not the options. Just reading only theory is not the way to crack the exam. The most important path is that
just take the knowledge, apply that knowledge, learn the application of that knowledge, and that is practicing MCQ and PYQ. And now very less time has very less time has left, so basically you have to focus on more and more revision and PYQ and MCQ practice. And the most जो PYT topic है, that is the previous year topics है, वो अगर आपके weak है, so focus on that also, ठीक है. So that's the main aim you should have in these last days. Okay, so moving to the next questions, that is a patient diagnosed with deep vein thrombosis is receiving unfractionated heparin infusion. Very important, because deep vein thrombosis, there is some thrombus in the deep vein, and there is very high chance this thrombus, this clot get dislodged and reach to the pulmonary circulation, है ना. pulmonary circulation में होगा तो क्या करेगा, it can leads to pulmonary embolism. So to prevent that, we have to start this heparin infusion. Okay, the latest activated partial thromboplastin time is 85 seconds. So जो latest APTT आया है, that is 85 second आया है. And you know very well, if the patient is on heparin infusion, what we have to monitor, that is the APTT value. We have to monitor the APTT value, very important. Okay, so what should be the most appropriate immediate nursing action? A, hold the heparin infusion. B, increase the heparin dose to enhance anticoagulation. C, initiate warfarin therapy immediately. And D, continue current treatment without any changes. C, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि हमें स्टॉप करना है, डोज इंक्रीज करना है, या फिर सेम जो डोज है उससे कंटिन्यू करना है. फर्स्ट वी हैव टू नो कि जो एपीटीटी की जो वैल्यू आई है, वेदर इट इज नॉर्मल, वेदर इट इज इन थेराप्यूटिक रेंज, या फिर कम है या फिर ज्यादा है, राइट. सो यू नो द एपीटीटी की जो नॉर्मल वैल्यू होती है, दैट इज अराउंड 25 to 40 सेकेंड होती है, एंड इट मे बी लाइक थोड़ा बहुत वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू द लैब. सो अकॉर्डिंग टू लैब इट्स very थोड़ा बहुत, but the normal value of APTT is around 25 to 40 seconds, right? But if the patient is on heparin, so that's we have to maintain therapeutic APTT value. Therapeutic means कि if the patient is on heparin infusion, of course this range should be high, so that जो उसका इफेक्ट हमें चाहिए वो होना चाहिए, right? So therapeutic range should be around 1.5 to 2.5 टाइम्स होना चाहिए. So 1.5 to 2.5 टाइम्स बोले तो अराउंड 60 to 80 सेकेंड होना चाहिए. तो अगर ये 60 से कम होगा, then the जो मेन हमारा एम है for that infusion वो complete नहीं होगा. And if it is more than 80 second means कि there is very high chance for bleeding, है ना, bleeding के chances बढ़ जाएगा. So this therapeutic range should be between 60 to 80 सेकेंड. एंड यहाँ पे क्वेश्चंस में उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, there is APTT की जो लेटेस्ट वैल्यू आई है, that is 85 सेकेंड है. इट मीन्स इट इज मोर देन 80 सेकेंड, इट मीन्स इट इज मोर देन थेराप्यूटिक रेंज, एंड there is हाई चांस फॉर ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ सकता है. सो व्हाट्स योर मोस्ट अप्रोप्रिएट इमीडिएट नर्सिंग एक्शन? ए, होल्ड द हेपेरिन इन्फ्यूजन. ओके, हो सकता है. बी पढ़ते हैं, इंक्रीज द हेपेरिन डोज टू इनहांस एंटीकोएगुलेशन. सो अगेन इट इज ऑलरेडी 85 सेकेंड, it is already more than the therapeutic range, there is already the chance of bleeding, and if you increase the heparin dose, it can lead more and more bleeding, है ना. So it is not the options, it is the incorrect one. See, initiate warfarin therapy immediately, it is not also the options. D, continue current treatment without any changes. तो continue current treatment without any changes जब होता, when the APTT value will be in between the therapeutic range. अगर ये 75 सेकेंड होता, 70 सेकेंड होता, then we have to continue the current treatment. But the APTT value is 85 second, it is more than the therapeutic range, so we have to hold the heparin infusion, inform to the physician, and according to that हमें titrate करना होगा, whether it is decrease or increase करके या फिर stop करना होगा. So the correct option is A is the correct option. Okay,
Moving to the next questions, that is a patient with diabetes insipidus is receiving vasopressin. Which finding shows the treatment is working? A. Urine specific gravity is 1.015. B. Urine output remains high. C. Weight loss of 1.5 kg in a week. And D is the increased थर्स्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो कि देखो यहाँ पे क्या आपको सब कुछ चेक करे, डायबिटीज इंसिपिडस दे दिया, उसका ट्रीटमेंट भी दे दिया, एंड दे आर चेकिंग कि वेसोप्रेसिन दे रहे हैं वो इफेक्टिव है कि नहीं है. सो यहाँ पे आपको सब कुछ चेक कर लिया कि डिजीज क्या होता है, क्या ट्रीटमेंट होता है, एंड वो ट्रीटमेंट इफेक्टिव कब है ना. सो दे आर चेकिंग एवरीथिंग रिगार्डिंग दैट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो डायबिटीज इंसिपिडस इज बेसिकली द डेफिशिएंसी ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन और रेजिस्टेंट टू दैट एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंड बिकॉज ऑफ दैट पेशेंट को क्या होगा, पेशेंट को होगा पॉलीयूरिया, बहुत बहुत यूरिन आएगा, एंड यूरिन कैसा होगा, अनडाइल्यूटेड. ऑफ कोर्स बहुत यूरिन आएगा तो अनडाइल्यूटेड ही होगा, मींस की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो लेस देन 1.005 होगी. नॉर्मल यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, दैट इज 1.005 टू 1.030 होती है, राइट. सो इट इज लेस देन 1.005 होगा, ठीक है. प्लस ऑफ कोर्स बहुत सारा यूरिन आएगा तो पेशेंट को बहुत सारा थर्स्ट भी फील होगा, सो पॉलीडिप्सिया होगा, एंड ऑफ कोर्स देयर इज डिहाइड्रेशन. सो लाइक पेशेंट ना ऐसे एक दिन में 8 to 9 लीटर पानी पिएगा, 11 to 12 लीटर यूरिन आएगा. सो दिस काइंड ऑफ कंडीशन होता है इन डायबिटीज इंसिपिडस में. सो फॉर दैट ट्रीटमेंट क्या होता है, ट्रीटमेंट होता है वेसोप्रेसिन और डेस्मोप्रेसिन इंट्रानेजली हम पेशेंट को देते हैं और ओरल टैबलेट के फॉर्म में देते हैं, ठीक है. सो वेदर बाय गिविंग वेसोप्रेसिन ट्रीटमेंट इज वर्किंग और नॉट. सो वेसोप्रेसिन बेसिकली क्या करेगा, यूरिन को जो इतना ज्यादा यूरिन फॉर्म हो रहा है उसको इनहिबिट करेगा. सो यूरिन क्या होने लग जाएगा, कंसंट्रेट हो जाएगा. सो पॉलीयूरिया भी डिक्रीज होगा एंड यूरिन और क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड हो जाएगा. कंसंट्रेटेड हो जाएगा इट मींस कि जो यूरिन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो विद इन नॉर्मल रेंज में आ जाएगी, ठीक है. सो उन्होंने बोला है कि विच फाइंडिंग शोज द ट्रीटमेंट इज वर्किंग. ए. यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 1.015. इट इज अगेन लाइक कि हाँ हो सकता है बिकॉज 1.005 to 1.030 इज द नॉर्मल and it is like in between the normal. So yes, it is the normal finding कि ये हो सकता है अगर patient vasopressin ले रहा है. So urine specific gravity should be fall in the within the normal range. So it is again कि yes, it is the sign of working, but still we have to read all the options. So B is saying urine output remains high. So let's suppose if patient is taking vasopressin, still if urine output is remain high, it means there is no any work, है ना. जो vasopressin का जो एक्शन होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है, means treatment is not working, right. So it is the wrong options. C. weight loss of 1.5 kg in a week. It means कि weight loss कब होगा, जब पेशेंट का बहुत सारा यूरिन आएगा, डिहाइड्रेशन होगा, है ना. It means again पेशेंट का जो हम vasopressin दे रहे हैं it is not working, है ना. So it is the wrong options. And D है increased thirst. Same again polyuria, polydipsia, or it means the treatment is not working. So D is also the incorrect option. So the best answer is A. urine specific gravity is 1.005. It means urine is getting concentrated and it means treatment is working. So A is the correct answer. Okay, so I hope you understand that questions very well. Okay, moving to the next questions, that is a patient present with burning, shooting, न्यूरोजेनिक पेन. ओके, सो जो नर्व्स वाले जो पेन होते हैं ना वो इस तरीके से ही होते हैं, लाइक बर्निंग, टिंगलिंग, ऐसा लगेगा कोई पिन चुभ हो रहा है ना. सो पेशेंट कंप्लेन करेगा somebody is लाइक पिन चुभ हो रहा है. सो इस टाइप के पेन होता है इन न्यूरोजेनिक पेन में, ठीक है ना. सो बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रॉइंग ऑफ दिस नर्व्स की वजह से, ठीक है ना. सो बर्निंग, शूटिंग, न्यूरोजेनिक पेन इन द राइट लेग विदाउट साइन ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन. विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशंस इज मोस्ट एप्रोप्रिएट एज फर्स्ट लाइन थेरेपी फॉर न्यूरोजेनिक पेन. सो देखो न्यूरोजेनिक पेन में बेसिकली हम लाइक पीसीएम, डाइक्लोफेनेक, दिस क्या बोलते हैं, आइबुप्रोफेन इज नॉट गिविंग, है ना. बिकॉज यहाँ पे जो पेन हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ द नर्व्स की वजह से हो रहा है. सो फॉर नर्व्स वाला पेन के लिए हमारा जो ट्रीटमेंट होता है दैट इज गावापेंटिन. वी कैन गिव गावापेंटिन, दैट इज लाइक फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट. बेसिकली ये क्या करता है कि जो न्यूरॉन की जो एक्साइटेबिलिटी है वो डिक्रीज करती है एंड बिकॉज ऑफ दैट जो पेन है पेशेंट का वो रिड्यूस होता है. सो दिस इज द फर्स्ट लाइन थेरेपी. अदर देन गावापेंटिन वी कैन गिव प्रीगैवेलिन,
प्रीगैबलिन और डुलोक्सिटिन भी दे सकते हैं, डिलॉक्सिटिन हो गया, या फिर एमिट्रिप्टिलिन, एमिट्रिप्टिलिन, ठीक है। सो इन्होंने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट एज फर्स्ट लाइन थेरेपी, इट इज गाबापेंटिन. Acetaminophen is for mild pain and it is not for the neurogenic pain, so it is the wrong. And ibuprofen and diclofenac basically क्या है, that is non-steroidal anti-inflammatory drugs है, so it is given for the inflammatory pain के लिए देते हैं, not the neurogenic pains के लिए. So C is also incorrect, D is also incorrect, तो answer is A is the correct option, ठीक है. So that's all the questions for today's class. I hope you understand well and you get an idea also ki which type of MCQ related to pharma is coming in our exam. Okay, so you have seen ki basically जो questions आ रहे हैं that is mixing of the practical knowledge, है ना. So it means you should know the disease also, you should know about the medicine also, and medicine का क्या action है, क्या side effects है, everything they are asking in the question. So you have a like deep thorough knowledge. Okay, so that's all about today. Thank you so much, all the best. In the last I can say jame raho, lage raho, very less time have left now, so please be and be focused too much. Okay, all the best.